Today's topic is thermonic emission. Emission of the electron from the hot metal surface is called the thermonic emission. Definition of the thermonic emission is the process of the emission of the electron from the hot metal surface is called the thermonic emission. Physicist experiment. In 1850, physicists started to examine the flow of the electricity through the vacuum by putting the two electrodes in a vacuum tube. Some kind of the rays were emitted from the cathode rays. Some kind of the rays are emitted from the cathode rays or the negative electrodes. These rays are named as electron. These rays were named as cathode rays or the electron. Practical physics experiment. Physics examined the flow of the electricity through the vacuum tube by putting the two electrode in it, cathode or the anode electrode in the vacuum tube. Some kind of the rays were emitted. Some kind of the rays were emitted from the cathode or the negative electrodes. These rays were called the cathode rays. After that, J.J. Thomson in 1897, J.J. Thomson observed that the deflection of the cathode rays by both electric and the magnetic field. From these deflection experiments, he concluded that cathode rays must carry a negative charge. Cathode rays must carry a negative charge. These negative charge particles were given the name electrons. These charge particles were given the name electrons. Electrons. First of all, scientist J.J. Thomson take a vacuum glass tube as fig. It consists of the two electrodes. One is cathode and second is anode. From when it is connected with the battery, then they saw that some kind of the rays may produce from the cathode rays. These particles were named as a electron. J.J. Thomson experiment is as that he take the glass tube and make the vacuum in it. Place two electrodes in it. One is cathode and second is anode. When it is connected with the battery, then he saw that some electron will be produced from the cathode and move towards the anode. These particles are named as electron. Now, process of the emission of the electron from the metal surface is called the thermonic emission. Now, it will be clear that metal has the free electron. Metal contains the large number of the free electron. At room temperature, these electrons cannot escape from the metal surface because they have the attractive forces between the nucleus. When it is heated, metal is heated, high temperature and the pressure, some of the free electron may give the sufficient energy to escape the metal surface. थर्मोनिक एमिशन से क्या मुराद है? मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉनों का अखराज क्या कहलाता है? थर्मोनिक एमिशन कहलाता है. कोई एक मेटल सरफेस है, उससे इलेक्ट्रॉनों का अखराज क्या कहलाता है? थर्मोनिक एमिशन कहलाता है. जब इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से खारिज होते हैं, उसके लिए फिजिस्ट ने 1850 में ये तजर्बा किया. उन्होंने एक वैक्यूम ट्यूब ली, उसमें दो इलेक्ट्रोड लटकाए और उसने देखा कुछ ख़ास किस्म की रेज नेगेटिव से इलेक्ट्रोड से या कैथोड से खारिज होती हैं. फिर J.J. थॉमसन ने इसको तजर्बे से साबित किया. उसने वैक्यूम ट्यूब ली, उसमें वैक्यूम लगाया, हवा को निकाल दी, गैस रख दी, उसमें दो इलेक्ट्रोड लटकाए, एक का नाम कैथोड एक का नाम एनोड रखा. बिजली सप्लाई की तो उसने देखा कि कैथोड से शुआओं का एक रेला जो होता है एनोड की तरफ सफ़र करता है. उसने इनको इलेक्ट्रॉन या कैथोड रेस का नाम दिया. अब यह कि मेटल से किसी गर्म मेटल की सतह से इलेक्ट्रॉनों का अखराज क्या कहलाता है? थर्मोनिक एमिशन कहलाता है. ऐसा अमल जिसमें गर्म मेटल की सतह से इलेक्ट्रॉनों का अखराज हो जाए उसे थर्मोनिक एमिशन कहलाता है. इसमें रूम टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन खारिज नहीं होते. रूम टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ मजबूती से जुड़े होते हैं, लेकिन अगर उसको हीट दी जाए, टेम्परेचर बढ़ाया जाए, तब इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है? अखराज होता है. थर्मोनिक एमिशन कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय electrical heating of fine tungsten filament. Take a tungsten filament, provided 6 volt voltage and 0.3 ampere current. Take a tungsten filament, provided voltage 6 voltage and 0.3 ampere current respectively, then the electron will be clearly produced from the negative charge. In the now experiment can be proved. Take a tungsten filament. When it is heated, electrically heated, and given the voltage and the current, voltage 6 voltage and 0.3 ampere current,
ampere current when provide to it, then the electron will be emitted from the cathode. थर्मोनिक एमिशन को इस तजर्बे से साबित किया जा सकता है कि एक टंगस्टन फिलामेंट लें, उसको इलेक्ट्रिकली हीट करें, उसको 6 वोल्ट का वोल्टेज दें, 0.3 एम्पेयर का करंट दें, आप देखेंगे कैथोड से इलेक्ट्रॉनों का क्या हो जाएगा, अखराज हो जाएगा। अब इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं, पहला थर्मोनिक एमिशन की तारीफ करें। डिफाइन द टर्म थर्मोनिक एमिशन, पेज नंबर 145 पर इसका आंसर मौजूद है। डिफाइन द टर्म थर्मोनिक एमिशन। The process of emission of the electron from the hot metal surface is called the thermonic emission. The process of the emission of electron from the hot metal surface is called the thermonic emission. सेकंड जो सवाल इसमें बन रहा है, सेकंड थर्मोनिक एमिशन के लिए कितने वोल्टेज और कितने एम्पेयर करंट की ज़रूरत होती है। हाउ मच वोल्टेज एंड द करंट इज रिक्वायर्ड फॉर द थर्मोनिक एमिशन, पेज 145 पे है। Take a tungsten filament and provided 6 volt voltage and 0.3 ampere current, then the thermonic emission process take place. Okay, this was the topic of the thermonic emission. Learn it please. Allah Hafiz.